Hello class 5th, you all are welcome back again in your social studies class. In this class, we are going to start another new chapter, chapter number 6, the machine age. In this class, we are going to learn about machine age. Invention of machine gave workers some leisure time. ठीक है बच्चों, जब मशीन्स का इन्वेंशन हुआ तो जो वर्कर्स है उन्हें कुछ खाली समय भी मिल गया. In early days, tools were made of stones. These tools were used to hunt animals and they were very crude and simple. With time, men developed pointed and sharp tools. Since these tools were made of stones, therefore the age is known as Stone Age. Better tools were made later on. Bachcho, previously we have studied about stones, Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic age. I hope you all have revised the chapter pretty well. सो बच्चों, जो ये टूल्स थे, ये जो औजार थे, ये किस काम आते थे? ये जानवरों के शिकार के काम आते थे. दे वर वेरी क्रूड एंड सिंपल. वो कैसे थे? बहुत ही ज्यादा क्रूड थे और बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, साधारण थे. विद द टाइम मैन डेवलप पॉइंटेड एंड शार्प टूल्स. जैसे जैसे बच्चों समय बीतता रहा, मनुष्य ने क्या डेवलप किया? उसने डेवलप किया पॉइंटेड और शार्प टूल. Since these tools were made up of stones, therefore the age is known as Stone Age. बच्चों, ये जो टूल्स हैं ये किससे बने थे? ये पत्थरों से बने थे. पहले के जमाने के टूल्स जो है वो पत्थरों से बनते थे, इसीलिए इस एज को बच्चों स्टोन एज कहते हैं. बेटर टूल्स वर मेड लेटर ऑन. और स्टोन एज के बाद बच्चों आफ्टर द इन्वेंशंस ऑफ after the discovery of iron, better tools were started in existence. कॉपर माइट बी द फर्स्ट मेटल टू बी यूज. हमने पढ़ा था कि सबसे पहले बच्चों आयरन से भी पहले कॉपर की खोज हुई थी. द डिस्कवरी ऑफ कॉपर मस्ट हैव बीन इंसिडेंटल. ठीक है, सभी चीज की डिस्कवरी कैसे इंसिडेंटली हुई है ना बच्चों, कि किसी ने लॉग धनकते हुए देखा तो पहिए का आविष्कार हो गया. किसी ने देखा दो पत्थरों के बीच में चिंगारी आ रही है तो फायर का आविष्कार हो गया. ठीक है बच्चों, इस तरह से किसी ने बीज खा के फेंक दिया, वहां प्लांट ग्रो हो गया तो एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया. The early men perhaps mixed copper and other metals like tin or zinc. Makes alloys such as bronze and brass. बच्चों, कॉपर के बाद आयरन वॉज द नेक्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर. कॉपर के बाद आयरन की खोज हुई. द अर्ली मैन यूज्ड आयरन टू मेक. अर्ली मैन आयरन का इस्तेमाल क्या करते थे बच्चों? किस लिए करते थे? औजार बनाने के लिए, ताकि वो जानवरों को आसानी से जानवरों का शिकार कर सके. आयरन मेड द अर्ली मैन वेरी पावरफुल एज नेवर बिफोर. ठीक है बच्चों, आयरन की डिस्कवरी के बाद जो अर्ली मैन थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए. मोस्ट ऑफ द टूल्स इन दिस पीरियड वर मेड ऑफ आयरन. Therefore, this period was called an Iron Age. Invention of steam engine. Now we are going to study about invention of steam engine. And who invented steam engine? So it was invented by James Watt. In the 17th century, the coal mines in England were flooded with water in rainy season. This made the mining of coal very tough. Water needed to be pumped out very instantly for work to be done completely. A powerful pump was required to pump out the water from the mines. James Watt thought of utilizing steam power to pump water out the mines. Thus, he invented a steam engine in 1769. James Watt's steam engine paved the way to the invention of railway engines. George Stephenson invented the railway engine in 1814 and his engine called Blucher, and it had a speed of 6 km per hour only. Now bachcho, after the discovery of iron, we have the discovery of steam engine, and that is exactly known as the turning point in the evolution of human being. In 17th century, बच्चों, the coal mines in England were flooded with water in rainy seasons. अब जो कोल माइंस है, जो कोयले की खदान है बच्चों, जब क्या होता था, जब बारिश होती थी, बाढ़ से वो माइंस जो है वो भर जाती थी.
इसी वजह से कोल की माइनिंग होना बहुत ज्यादा दिक्कत देता था अर्ली ह्यूमंस को। उनको एक पावरफुल पंप चाहिए था जो कोल माइन से पानी बाहर निकाल सके और लोग आसानी से कोयले में अपना कोयले की खदान को खोद सके। A powerful pump was required to pump the water out from the mines. James Watt thought of utilizing steam power to pump water out of the mine, and he has discovered what steam engine. Then we have George Stephenson. उन्होंने इन्वेंट किया बच्चों रेलवे इंजन का in the year 1814 and उनके इंजन को ब्लूचर के नाम से जाना जाता है and it had a speed of 6 kilometer per hour only. The first truly successful railway engine prepared by George Stephenson in 1829, it was named Rocket. It ran at a speed of about 50 km per hour. It presented a model for coming steam locomotives. Later, diesel and petrol were used to run engines. This led to the invention of motor cars, buses, trucks, and even more powerful engines for ships, railways, and aeroplanes. ठीक है बच्चों, so the first truly successful जो railway engine था, it was discovered by George. We have his picture in the textbook, and he has also invented the rocket as you can see in the picture. Later, diesel and petrol का इस्तेमाल होने लगा बच्चों इन engines को चलाने के लिए. Mass production and industrial revolution. Now we are going to study about mass production and how industrial revolution take place and which has changed our society. The term mass production means to produce goods in huge quantities at low cost. It could be possible because of the utility of machines. Mass production became the key note of industries. Many large factories were set up where goods in huge quantities were produced. People began to migrate to work in large factories, and this gave rise to the number of big cities. There were a big chance in the mode of production in this period. Therefore, this period is called Industrial Revolution. And the Industrial Revolution generated employment to the thousands of people. The Industrial Revolution began in late 1700 in Britain. बच्चों अब क्या हुआ? अब हुआ मास प्रोडक्शन, यानी कि भारी मात्रा में किसी गुड्स का, किसी चीज का प्रोड्यूस करना, किसी चीज का उत्पादन करना, और फिर हुआ बच्चों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी ऑफ मशीन. मास प्रोडक्शन जो था, इट बिकेम द की नोट ऑफ इंडस्ट्री. बहुत सारी लार्ज फैक्ट्रीज बच्चों सेटअप की गई जहां ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए. एंड देयरफॉर दिस पीरियड इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या जनरेट करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है टू द थाउजेंड ऑफ पीपल. The Industrial Revolution began in late 1700 in Britain. Then we have fuels for giant machine. Now we are going to discuss about fuels. Giant machine मतलब बच्चों बड़ी बड़ी मशीनें, huge machine. Earlier, system was thought to be the main source of energy and steam was obtained by boiling water. Fire was used to boil water, which in turn needed wind or coal, and thus wood or coal was called the main source which supplied energy. बच्चों पहले के टाइम पे अर्लियर स्टीम किससे यूज होती थी? इट वाज टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. स्टीम इंजन वाज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग वाटर, बट फायर वाज यूज्ड टू बॉयल वाटर व्हिच टर्न द नीड ऑफ वुड एंड कोल. इसीलिए बच्चों वुड और कोल को क्या कहा जाता है? मेन सोर्स ऑफ. देन वी हैव कोल. So it was the first fuel to be utilized in machine. Coal is found very deep below the surface of the earth. It is explored through mines. As the demand of coal grew day by day, the coal mines became deeper. Moreover, since the deposit of coal mines are limited, therefore they would deplete in near future. Thus man began to search for other source of energy. बच्चों क्या हुआ? Fuels for giant machines were required. ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा.
उसके बाद बच्चों कोल क्या है, इट वॉज द फर्स्ट टू बी यूटिलाइज इन मशीन। लेकिन बच्चों आप सभी को पता है कि कोल जो है वो पृथ्वी की जब खुदाई होती है, जहां माइंस एरिया रहते हैं, जहां खदान होती है कोयले की, वहां खुदाई होती है तो कोल को निकाला जाता है। लेकिन बच्चों ये एग्जॉस्टेबल इन नेचर है, कोल जो है वो अनलिमिटेड इन सॉरी लिमिटेड इन नेचर है, ये ज्यादा नहीं है, ये बस लिमिटेड नेचर का ही है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, जब लोग बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, तब जो कोयले की खदान है उसे और ज्यादा खोदा जाने लगा। लेकिन बच्चों डिपॉजिट ऑफ कोल्स आर लिमिटेड, इसीलिए जो मनुष्य है वो उसका सब्स्टिट्यूट खोजने लगा। Mineral oil is a liquid fuel obtained from below the earth's surface, and it was spirit, gasoline, and several other chemicals. Now, what is mineral oil? Mineral oil एक liquid है that is obtained from below the earth's surface. ये भी earth surface से ही मिलता है. So बच्चों आप देख पा रहे हो कि below the earth's surface there are so many things that modern world is utilizing, but we should utilize it carefully. The first practical petrol engine was built in 1876 in Germany by Nicholas August Otto. Although there had been earlier attempts to Antony Lenore, Siegfried Marcus, Julius Hawk, and George Brayton, later their engine was used in four-wheelers. Later, Rudolf Diesel, a German scientist, invented an engine that could run on another type of mineral oil called diesel. It was cheaper petrol. Diesel is utilized as fuel in heavy trucks, ships, railway engines, and pumps. However, the deposit of mineral oil are also limited. Oil reserve on earth would become insufficient within 150 years. Fortunately, an alternative source of energy, electricity, had already been invented. ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्रैक्टिकल पेट्रोल इंजन इन्वेंट हुआ था बच्चों 1876 में जर्मनी में बाय निकोलस के द्वारा। एंड देन ऑल्दो देयर हैड बीन अर्लियर अटेम्प्ट्स भी किए गए, लेटर ऑन बच्चों देयर वर इंजन यूज्ड इन फोर व्हीलर्स। एंड देन व्हेन नेम कम बच्चों द इन्वेंटर ऑफ डीजल, इट इज लेटर रुडोल्फ डीजल। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया diesel, an engine that could run on another type of mineral oil called diesel, and these are the vehicles given to you on which it runs. Now man has invented electricity. Electricity, it is the most important source of energy. It is generated in two ways. Electricity is the most important way of energy. ये दो तरीके से generate की जाती है. Electricity generated from using water is called hydroelectricity. Electricity that is generated by burning fuel as coal, natural gas, or minerals oil is known as thermal electricity. And there is an interesting story behind the invention of electricity. Once a man in Netherlands made a strange toy called Leyden jar. It was a glass bottle coated with metal foil from inside and outside. It has two wires on one side, the bottle on the other outside. Once the two wires were connected together and they generate shock. The shock made the children jump, which when they made others surprised to see them. American scientist Benjamin Franklin heard about Leyden jar. He began to think regarding toy. He saw light. He saw the lightning thunderstorm at the shock generated in Leyden jar, and very much shocked. In order to prove this, he decided to fly a kite in thunderstorm from the balcony of his big house. He had tied a key to one end on the thread. The moment the lightning flash, he touched the metal key, he got a strong shock. Thus, he came to conclusion that shock in Leyden jar and lightning in the sky were quite similar. In this way, electricity was discovered. In 1800, an Italian scientist, Alessandro Volta, made a battery which generated a small quantity of electricity, and after some years, the scientists prepared new engines and machines which could produce better quantity of electricity. These engines were called generators. Okay, so here बच्चों
इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं बच्चों। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सभी को पता है जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है एनर्जी का। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम यूजिंग रनिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, एक बार एक लेडन जॉर्ज थे, इन्होंने एक स्ट्रेंज टॉय बनाया। कैसा? वो एक ग्लास बॉटल थी जो कोटेड थी मेटल फॉयल से, इनसाइड एंड आउटसाइड, और उसमें दो वायर्स थे, ऑन अंदर साइड ऑफ द बॉटल एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉटल। और जब वो बॉटल आपस में कनेक्टेड होते थे बच्चों, तो एक झटका लगता था, एक शॉक होता था, और बच्चे उस शॉक को देख के खुश हो जाते थे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने इस चीज के बारे में सुना, फिर उन्होंने देखा, ही सॉ द लाइटनिंग ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। उसके बाद उन्हें शॉक जनरेट हुआ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा ये वही शॉक है जो लीडन के जार से आता है। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पतंग उड़ाएंगे इन द थंडरस्टॉर्म फ्रॉम द बालकनी ऑफ अ बिग हाउस। उन्होंने क्या किया, ही हैड टाई अ की टू वन एंड ऑफ द थ्रेड, एंड द मूवमेंट ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, और जैसे ही उन्होंने इस मेटल की को टच किया बच्चों, ही गॉट अ स्ट्रॉन्ग शॉक। इसीलिए उनको पता चला दैट Leyden jar and lightning the sky were quite similar. In this way, he discovered electricity. Then again, we have Alessandro Volta. He has discovered small batteries. Sorry, battery which generate a small quantity of electricity. But generator also need coal, diesel or petrol to generate electricity. Therefore, man continues to look for an alternative source of energy. Then we have alternative source of energy. There are very limited deposit of coal, natural gas and petroleum. Beside these, they are totally non-renewable. Hence, the scientists are looking for other source also, which could be possible source of energy. They have already pointed out some sources like the sun, wind, water, earth, tide. These sources of energy are eternal, and they have an upper hand over other sources in the senses that they do not create any kind of pollution. And all sources of the energy must be used with utmost care, and this energy must be conserved for future. ठीक है बच्चों, सो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? देयर आर वेरी लिमिटेड डिपॉजिट ऑफ कोल, नेचुरल एंड पेट्रोलियम। ये कैसे है? ये एग्जॉस्टेबल है, ये लिमिटेड इन नेचर है, ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है बच्चों, एंड बिसाइड दीज टोटली नॉन रेन्यूएबल। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट आर लुकिंग सम अदर सोर्सेज दैट कुड बी पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। They have already pointed out some sources जैसे कि sun है, wind है, water है। ये कैसे है बच्चों? ये renewable source है, they are unlimited in nature, so इनके through ही they are trying to create some energy, and this energy must be conserved for future. That's all for this chapter. Learn the glossary of the chapter and summarize the chapter properly. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.